Hello everyone, welcome to today's class. In this previous lecture, we have already studied about the resistors in series. In this class, we are going to learn about resistors in parallel type of combination. Okay, so let us wait. So here we have three resistors R1, R2 and R3 and they are connected in this form. This is known as the parallel combination of resistors. See, the lines over here are parallel to each other. So this is known as the parallel combination of resistors. Okay. So we are going to start with an activity. What we are going to do is, this is say point A and this is say point B. Okay. We are going to attach a voltmeter to this entire parallel combination of the resistors. And we are going to note the reading for the voltmeter. Say the reading for the voltmeter is 6 volt. Okay. So we have noted the reading for the voltmeter for the entire combination of the parallel resistors, of the resistors combined or attached in parallel combination. Okay. Now what we are going to do is, we remove the voltmeter from this combination . When we apply the voltmeter to this parallel combination entire and we get the voltage, this is the total potential difference. Okay. Now we are going to find out the individual potential difference. So what we do is, we individually attach the voltmeter to each of the resistors. ठीक है, पहले हमने टोटल में लगाया एक वोल्टमीटर, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंडिविजुअली वोल्टमीटर को हर एक रेजिस्टर के ऊपर अटैच कर रहे हैं. ठीक है. When we apply the voltmeter individually to each of the resistors, we found that the potential difference in all the three cases is equal to the total potential difference. Means the potential difference across R1 is also 6 volt, across R2 is also 6 volt, and across R3 is also 6 volts. And the total potential difference is also 6 volts. Okay. So we note that the individual potential difference is equal to the total potential difference. So the first point is the potential difference across each individual resistor remains same. So in the series combination of resistors, we have already seen that the potential, that the current in each of the resistors remains same. In the parallel type of combination, the potential difference across each of the resistors will remain same. So in series, the current remains same, and in parallel, the potential difference remains same. Okay. Now what we do is, we remove the voltmeter. Now moving on to the current. Let's see what happens to the current. So first of all, we attach the ammeter to the combination, to the circuit, and we note down the total current. So say the total, the reading of the ammeter gives us a total current I. Say the total current is 10 amperes, for example. Okay, so the total current is I. So we note the value for the ammeter when we attach the ammeter to the entire circuit, to the combination of the three resistors, and we note the reading of the total current, which is I. Okay, so I is the total current. Now what we do is, we attach an ammeter to the individual resistors and we note the reading. When we note the reading of the first ammeter, which is connected to the R1 resistor, we find that the value of current is different from I. Say it is some I1. Say I1 is 2 ampere, for example. Okay. When we note the reading for the second ammeter, which is connected to the R2 resistor, we note that the reading for the ampere, the value of current, is neither same as I nor as I1. It has some different value. इसकी कुछ और ही value है.
इसकी वैल्यू ना I से सेम है ना I1 से सेम है, इसकी वैल्यू कुछ और है, कुछ डिफरेंट वैल्यू है। से वैल्यू इज 5 एम्पियर फॉर एग्जांपल, ओके। And when we note the reading for the third ammeter, that is, it is with the one which is connected to the R3 resistor, we note that the value of current is something more different. I भी नहीं है, I1 के इक्वल भी नहीं है, I2 भी के इक्वल भी नहीं है, which is something more different, say 3 ampere. So in parallel type of combination, the value of current is different. So current through each resistor is different. In series type of combination, current through each resistor is same, and in parallel type of combination, current through each resistor is different. ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट अलग रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। ठीक है, तो यह है सीरीज और पैरेलल। द अदर इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी नोट इज जब हम I1, I2 और I3 को ऐड करते हैं, ठीक है, 2 + 5 + 3, तो हमें आंसर मिलता है 10, which is equal to the value of I, total current I. So I1 + I2 + I3 जब हम करते हैं, so the value of current is equal to the total current I. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो I करंट है, ये I करंट टोटल करंट कैसे लाया, ये I करंट को 3 रास्ते मिले, ठीक है, जाने के लिए। So the I current will divide into I1, I2 and I3. I current जो है वो डिवाइड हो गया I1, I2 and I3 में। The value of I1, I2 and I3 will not be same. Okay, it can be, but necessarily it will not be same. When it will be same, when the value of R1, R2 and R3, all the 3 resistors are of equal value. Say all the 3 resistors are of 2 ohm. So in that case, the current will divide equally. But if the resistors are of different value, then the value of current will not at all be same. So the current will not divide equally. It will divide with unequal values. Okay. So the I1 current goes in R1, the I2 current goes in R2, and the I3 current goes through R3. Okay. यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आया और यहां से I3 करंट आया। I1, I2 और I3 तीनों इस पॉइंट पे वापस मिल गए। I1 + I2 + I3 इक्वल टू क्या बन गया, I, और यही I करंट वापस चला जाएगा। ठीक है, सो व्हाइल सॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे प्रॉब्लम्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, then कभी-कभी क्या होता है, it is very difficult for us to find out that which of the combination is in series and which of the combination is in parallel. हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन इसमें से सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन इसमें से पैरेलल में है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि हम करंट की हेल्प लेते हैं टू फाइंड आउट which of them are in series and which of them are in parallel। ठीक है, जिन रेजिस्टर्स में करंट सेम रहता है वो हम कंक्लूड करते हैं दैट दे आर इन सीरीज, एंड जिन रेजिस्टर्स में करंट डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है, दैट वी कंक्लूड टू बी इन पैरेलल। ठीक है, हम जब आगे फ्यू लेक्चर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में है और कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द डेरिवेशन। अब हम करेंगे डेरिवेशन फॉर द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। Keeping this relation in mind, I equals to I1 plus I2 plus I3. Applying Ohm's law, ठीक है, Ohm's law क्या होता है, V equals to IR। तो सबसे पहले फर्स्ट हम Ohm's law अप्लाई करेंगे to the parallel combination of resistors, to the entire circuit।
So applying Ohm's law, first of all हम apply करेंगे to the parallel combination. ठीक है, पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो रेजिस्टेंस भी टोटल लेंगे, करंट भी टोटल लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल लेंगे. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू total resistance for the parallel combination, Rp. Okay, so I will be equal to V upon Rp. Okay, now second, applying Ohm's law to the individual resistors. Okay, applying Ohm's law to the individual resistors. Individual resistors पे Ohm's law apply कर रहे हैं. So first resistor, हमें मालूम है that the potential difference through all the three resistors is V. Potential difference across each individual resistor remains same, which is equal to V. So the potential difference across all the three resistors is V. Taking the first one, I1, R1 and V. Applying Ohm's law, I1 is equal to V upon R1. First वाला लिया है तो, okay. I2 is equal to V upon R2 for the second resistor. I2 current, R2 is the resistance and V is the potential difference. And I3 is equal to V upon R3. Okay, now say this is equation 3, this is equation 2 and say this one is equation 1. Substituting 2 and 3 in equation 1. What is the value for I? V upon Rp. V upon Rp. I की जगह क्या पुट कर दिया? V upon Rp is equal to I1. I1 की जगह क्या पुट कर देंगे? V upon R1 प्लस I2 की जगह क्या पुट कर देंगे? V upon R2 प्लस I3 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे V upon R3. I equals to I1 plus I2 plus I3. Now V upon Rp is equal to V common 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. V से V gets cancelled. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. So this is the equivalent resistance for the combination of resistors in parallel type. Okay, so this is the equivalent resistance. The reciprocal of the equivalent resistance or the reciprocal of the total resistance for the resistors in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance. ठीक है, 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, मतलब अगर से R1 is 2 ohm, R2 is 3 ohm and R3 is 4 ohm for example. So total resistance क्या होगा? 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 is equal to 1 upon Rp. This is the way to calculate the total resistance or equivalent resistance. Okay, so this is the formula. This will be more clear हमें numerical करते हैं. Okay, okay, so this is the question, this is the problem. What is the problem? That there are three resistors connected in parallel. The value for R1 is 5 ohm, the value for R2 is 10 ohm and the value for R3 is 30 ohm. R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm and R3 is 30 ohm. All the three are connected in parallel. So first of all we need to find
the equivalent resistance or the total resistance of the circuit. Okay. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. So 1 upon Rp will be equal to 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon 30. Okay. LCM निकालेंगे. LCM will be 30. 6 plus 3 plus 1, which is equal to 10 upon 30, which is equal to 1 upon 3. So 1 upon Rp is equal to 1 upon Rp is equal to 1 upon 3. ठीक है. हमें 1 upon Rp की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? Rp, equivalent resistance, total resistance. So the value of Rp will be 3 ohm. हमें क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. Okay, so जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, so we get the value as 3 ohm. So 3 ohm is the equivalent resistance. तो सॉल्व करने के बाद at the last हमें क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल करना है to get the equivalent resistance. Okay, so this is the way in which we find the equivalent resistance in parallel type of combination. Okay. Now the second, find out the total current. Okay, we need to find out the total current. The battery is of 12 volt. The battery is of 12 volt. So the total potential difference V is 12 volt and the total resistance Rp is 3 ohm. When we need to find total current, जब हमें total निकालना हो तो सारी values जो है वो total की होनी चाहिए. Then only we will get something which is total. So अगर हमें total current चाहिए तो total potential difference लिखना पड़ेगा और total resistance लिखना पड़ेगा. Okay? Applying Ohm's law, V equals to IR. V is 12. I तो हमें निकालना है. R is 3. So I is equal to 12 upon 3, which is 4 ampere. So I क्या आ गया? 4 ampere. Okay. Now the third part, find the current through each resistor. करंट थ्रू ईच रेजिस्टर हमें निकालना है. हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट. हमें मालूम है कि इन पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर रेजिस्टर का सेम रहता है एज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों रेजिस्टर में सेम रहेगा, विच इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 12 वोल्ट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 भी 12 वोल्ट रहेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 भी 12 वोल्ट रहेगा. 12 वोल्ट कहां से आया? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है. So the potential difference across each of the resistor will be equal to the total potential difference. ठीक है. अगर हमें निकालना है I1, ठीक है, Ohm's law, V equals to IR होता है. ठीक है. So I equals to V upon R. Okay. हमें निकालना है I1. I1 क्या रहेगा? For the first resistor, potential difference क्या है? V और R क्या है? R1. So V upon R1. Okay. For the second resistor, I2 equal to potential difference क्या है? V. Resistance क्या है? R2. And I3 for the third resistor, potential difference क्या है? V और resistance क्या है? R3. ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे. तो I1 निकालना है, potential difference is 12, R1 is 5. So I1 will be equal to 2.4. Okay. I2 is equal to 12 upon what is R2? 10, which is equal to 1.5.
1.2 एम्पियर. ओके. थर्ड I3 12 upon what is R3? 30. Okay, 12 upon 30, 0.4 एम्पियर. ठीक है. नाउ ये आगे I1 I2 I3 द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ओके, तो हमें मिलता है आंसर एज 4 एम्पियर. ओके, सो दिस इज ऑल विथ रेजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके, नाउ the next part, the next we can say a question is that why is the parallel type of combination used in household circuits rather than series? Okay, so why is the parallel type of combination used in households rather than series? जैसे हमारे घरों में parallel type of combination क्यों यूज करते हैं, series type of combination यूज क्यों नहीं करते? ठीक है. So first reason is कि पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिफरेंट रहता है, विच इज वेरी यूजफुल. अब वो कैसे यूजफुल है कि अगर सपोज हम सीरीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन लगा दें, ठीक है, अगर हम सीरीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, स्मॉल क्वेश्चन लिख लेते हैं. used in household circuits. ठीक है. या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज. ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज? तो सबसे पहला क्या है कि इन पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट. सो हाउ इज दिस यूजफुल? ये कैसे यूजफुल है? क्योंकि हाउसहोल्ड सर्किट्स में, हमारे हाउसहोल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. जैसे अगर टू मेजर टाइप ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस देखें तो हमारे घर में बल्ब भी होता है और हमारे घर में रेफ्रिजरेटर भी होता है. ठीक है. अब रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, हेवी डिवाइसेस, तो हमारे घर में बल्ब भी है और रेफ्रिजरेटर भी है, एयर कंडीशनर भी है. सो अगर बल्ब को जितना करंट दे रहे हैं उतना ही करंट अगर रेफ्रिजरेटर को दिया जाए तो वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है. और अगर रेफ्रिजरेटर को जितना करंट दे रहे हैं उतना बल्ब को दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा. ठीक है, डैमेज हो जाएगा. So it is very impractical to give same amount of current to all the appliances. ठीक है, heavy appliances, light appliances, सबको एक जैसा करंट देना is quite impractical. ठीक है. तो क्योंकि सीरीज पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट रहता है, इसलिए अलग अलग अप्लायंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंसेस कैन इजीली वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. तो करंट की रिक्वायरमेंट्स हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अपनी अलग होती है, और क्योंकि पैरेलल में करंट अलग होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिफरेंट करंट, अपने अपने हिसाब से जो डिफरेंट करंट वैल्यूज उनको रिक्वायर्ड है उस पर प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड रीजन इज कि इन सीरीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इफ वन अप्लायंस फेल्स या फिर stops working, all the other appliances will also not work. ठीक है. सीरीज टाइप में, अच्छा, दिवाली लाइट्स देखी होगी, विच वी कॉल एज फेरी लाइट्स. फेरी लाइट्स भी बोलते हैं उन्हें.
दिवाली की सीरीज होती है, उन्हें सीरीज भी बोलते हैं। ऐसी वायर होता है और उनमें छोटे छोटे ऐसे बल्ब्स लगे होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऐसे छोटे छोटे बल्ब्स लगे होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब उसमें क्या होता है कि इवन इफ वन बल्ब, एक सिंगल बल्ब भी अगर खराब हो जाए या फंक्शन करना बंद कर दे, तो क्या होता है कि पूरी सीरीज जो है वो खराब हो जाती है, उसमें से एक भी बल्ब वर्क नहीं करता। सो दैट इज द रीजन कि जो इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए भी इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा बल्ब जो है वो खराब है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितने भी बल्ब्स है वो सारे सीरीज में अटैच्ड है। सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है, तो अगर एक अप्लायंस भी फेल हो गया तो करंट का जो फ्लो है दैट विल नॉट, द करंट विल नॉट फ्लो, द फ्लो ऑफ द करंट विल स्टॉप, करंट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। उसकी वजह से कोई भी अप्लायंस जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इन सीरीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन अगर एक अप्लायंस फेल हो जाता है या फंक्शन करना स्टॉप कर देता है तो सारे अप्लायंसेस विल स्टॉप फंक्शनिंग। ओके, सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज। थर्ड, अगर हम दो रेजिस्टर्स ले, से R1 is say 5 ohm and R2 is say 30 ohm, ओके, और से तीन रेजिस्टर्स ले ले, 10 ohm and R3 is say 30 ohm, जो अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया। ठीक है, अगर हम सीरीज में देखें तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी 5 plus 10 plus 30। दिस इज द फॉर्मूला, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 45 ohm। This will be the total resistance in series type of combination. In parallel type of combination, 1 upon Rp is equal to 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon 30, which is equal to 1 upon 3. So Rp will be equal to 3 ohm. So see, same three resistors हैं for same value. सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, मोर रेजिस्टेंस, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा, ठीक है, रुकावट ज्यादा रहेगी तो करंट कम फ्लो होगा, सो करंट विल बी लेस, और अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा सो द करंट विल बी मोर। तो अगर हम पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो बहुत कम रहता है, इट इज वेरी लेस, एंड सो द करंट फ्लोइंग इज मोर, तो हमें बहुत ज्यादा करंट मिलता है। ठीक है, एंड द फोर्थ एंड लास्ट रीजन इज कि क्योंकि पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द अप्लायंसेस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए सारे अप्लायंसेस एक सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर पाते हैं। सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस देने की हेडेक नहीं होती, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे, एक ही वोल्टेज पे सारे अप्लायंसेस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फोर मेजर रीजंस फॉर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज। दिस इज ऑल विथ टुडेज लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।